Hello everyone. Hello. Hello I everyone. hope I'm audible to all. If I'm audible, Yes. please ping in the chat, Yes. guys. If I'm audible, so this is day 6 of Learn C++. I hope that you have revised all the concept till day 5, and today we are going to start with some more exciting topics plus some more exciting content. So I hope you all are doing great. Comment section में बताओ यार अगर if you have any doubt, if you want you know to if you want a revision of any quick revision of any particular topic, तो comment section में बताओ यार please. Or we are good to go today. We are going to start this series with this session with lots of excitement. तो चलिए शुरू करते हैं फिर. ठीक है, perfectly audible. Great guys, great. Okay, so can we start guys, or you have any doubt? Okay, so let's. I think no No doubt I've seen in the comment section. So let us start with today's session. चलिए शुरू. Okay, Can we- guys. yes, Let's go. let's. So, assuming that there are no doubts, let's begin with today's first topic, guys. So, guys, today, this is where we have done till now. We have studied arrays and हमने loops कर लिए. So, guys, let's move on to today's first topic. That is going to be, address. So, आज तक हमने हर एक, value को या variables को हमने address से accept करा है. Not address से variable से. But now we want to, work on an address level. So, how to do that? So, first of all, there is this operator called the AND operator, and how the AND operator works is basically अगर आप किसी भी variable से पहले ये ampersand symbol use करते हो, then you are going to get the address of that variable. अब what is address and how is exactly variable? अब variable क्या करता है कि जब आप किसी जैसे आपको एक example दिख रहा है int bond is equal to 7. The moment I write that, computer क्या करता है वो memory पे जहाँ पे भी program run हो रहा है it allocates a small memory block. जैसे हमें पता है integer की size 4 bytes है तो 4 bytes की एक छोटी सी memory को reserve कर लेगा and जब भी हम program में कहीं पे ये value use करते हैं whenever we say bond it means it will refer to that memory जहाँ पे इसने वो 4 bytes की memory use करी है. So आज तक हमें जब भी किसी variable को use करना होता है we directly access it through the name of that variable. अगर मुझे ये value 7 को use करना है मैं कहीं पे value बोलूँगा bond तभी मैं उसको use कर सकता हूँ variable के name से. But today instead of using through variable name उसका address access करने का कोशिश करते हैं, right?
So to access the address, C++ makes it very easy. कुछ नहीं करना, सिर्फ वेरिएबल से पहले ये एम्परसेंड सिंबल यूज करनी है, राइट? मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है, अब इसी को कोड करके देखेंगे, राइट? सो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल रखा बॉन्ड, और जब मैंने प्रिंट करते वक्त इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली राइटिंग बॉन्ड, अगर मैंने एम्परसेंड बॉन्ड लिख दिया, दिस सिंबल को एम्परसेंड बोलते हैं. सो if I write ampersand bond, then I'm going and then I run the code, you can see the output एक address आती है. So let's do that. Let's try to verify that. So let me zoom in a bit. So I hope the text is visible. Can you give me a quick confirmation that the text is visible, or should I zoom in more? This one, the text is visible. You can continue with the session further. The text is completely Okay. clear and visible. Okay, cool. Yeah, nice drawing. Thank you. So basically, this is a cow which is telling that today we will learn address of operators, right? So guys, मैंने basic code का boilerplate लिख दिया, right? I am having dependencies import कर ली है मैंने. We learned about what this library does. ये आपकी सारी libraries को import कर देता है, so we don't have to worry कि यार कोई miss तो नहीं हो गया. Then मैंने simple namespace include कर रखा है, and मैंने एक int main void function लिख दिया, right? So now let's start with the actual code. First, let's declare a variable. I'll say int bond is equal to 7. ठीक है, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, एंड नाउ सिंपल तरीके से मैं इसको प्रिंट करता हूँ, वैल्यू ऑफ बॉन्ड. इफ आई से वैल्यू ऑफ बॉन्ड, एंड वी ऑलरेडी नो हमें अगर बॉन्ड वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, दिस इज व्हाट वी डू, जस्ट से वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंड देन हम वेरिएबल लिख देते हैं. एंड इफ आई रन दिस कोड, I just need to go to CD. Yeah, I'm already in the right folder. So I will just say G++ and run. And you can see the code works exactly fine. And we already know how this works. But abhi hame address print karna hai. So what I'll do here is I'll say address of variable bond. And यहाँ पे guys, what I'll do here is first of all मैं इसे common brackets में enclose करूँगा. I'll wrap it within common brackets so that बाकी के operators के साथ mess ना करे. And what I'm going to do is मैं इसके variable से पहले बस एक simple ampersand symbol use करूँगा. And this ampersand symbol is known as address of operators, as I've highlighted here in the top of the code. इस operator को address of operator बोलते हैं, right? And this is going to be very useful because today we are going to learn pointers, and this is the most fundamental part of pointers. Address of operators. So I just wrote ampersand bond, and let's see अभी difference क्या आने वाला है. जैसे पहले bond लिखते थे value print होती थी guys. So can you tell me in the chat अभी क्या print होने वाला है when I use ampersand bond? I've already told it many times, but I just want to know if everyone is clear on it. What is going to be the output of this particular line? Ampersand bond, hexadecimal address, cool. And what is the difference in reference? A reference is and pointer. Basically, pointer is itself a reference. Today we'll see that pointer को ही reference बोलते हैं. And let's run the code now, and let's see. So yeah, when I say just bond, उसकी value print होती है, and when I say ampersand bond, उसकी एड्रेस प्रिंट हो रही है. अब ये एड्रेस क्या है? वी ऑलरेडी नो कि एड्रेस इज बेसिकली जहाँ पे वो उसकी मेमोरी एलोकेट हुई है, ये उसका एड्रेस है इन कंप्यूटर्स रैम. दिस इज बीइंग एग्जीक्यूटेड इन द रैम. सो and some people are telling in the chats that this is an hexadecimal address. And how do you know कि this is hexadecimal address? Well, if you look closely, यहाँ पे हो क्या रहा है? Basically, you can see that this address is starting with 0x, and 0x किसी भी नंबर से पहले अगर होता है in any programming language, you go to Python, C, C++, Java, anywhere, if a number is starting with 0x, it means it is a hexadecimal number. वो prefix होता है, ठीक है, readability के लिए मतलब for us it for human readable purpose एक ऐसे prefix attached होता है. If it was an octal, यहाँ पे 0 लिखा होता शायद, या I guess 0 and small b. And if it was a binary, there would be a 0 and capital B. तो ऐसे कुछ prefixes होते हैं. So don't worry about what is hexadecimal address. अभी हम इसको बहुत ज़्यादा use करेंगे and everyone will be comfortable. So let's move on to the next topic, that is ampersand operator, and it's done. And let's move on to the next topic.
So guys, the next topic is, as I said, till now we were just using the वेरिएबल थ्रू इट्स नेम, बट आज हमें वेरिएबल के नेम से नहीं, आज हमें वेरिएबल के एड्रेस से यूज करना है. सो हाउ टू डू दैट? The technique is called pointers. The pointer is a type, a special type of variable, and let's see what it does. So a pointer in C++ is a special variable which can hold address of similar data type. This is very important, similar data type. And guys, this is how you declare a pointer. Data type, देन एक छोटी सी एस्ट्रिक मार्क देनी होती है, ठीक है. दिस सिग्निफाइज कि ये एक सिंपल डेटा टाइप नहीं है, दिस इज गोइंग टू बी अ पॉइंटर, एंड देन नेम ऑफ द पॉइंटर एंड एड्रेस ऑफ वेरिएबल. नाउ यू माइट बी थिंकिंग, यार एम्परसेंड सिंबल से तो हमने एड्रेस निकाल लिया, बट व्हाई डू वी नीड अ पॉइंटर? बिकॉज जस्ट सिंपल एम्परसेंड ऑपरेटर से हमें एड्रेस वैसे भी मिल रही थी. देन व्हाई डू वी नीड पॉइंटर्स? वेल, ये जो वैल्यू है, दिस कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अ सिंपल डेटा टाइप. लाइक अब ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड एक इंटीजर डेटा टाइप है, ठीक है. बट अ सिंपल इंटीजर वेरिएबल कैन नॉट स्टोर द वैल्यू ऑफ द एड्रेस. वो एड्रेस होल्ड नहीं कर सकता, वो एक सिंपल वैल्यू होल्ड कर सकता है. दैट इज वेयर पॉइंटर्स कम इनटू प्ले. पॉइंटर्स कैन स्टोर एड्रेस. So as we just saw, this is the syntax of declaring a pointer. So with this syntax in mind, let's declare a pointer. So what I'll do here is मैं यहाँ पे एक इंटीजर यूज करूंगा, बिकॉज मुझे इंटीजर वेरिएबल की एड्रेस स्टोर करनी है. सो मैं इंट लिखूंगा. अगर मैंने यहाँ पे फ्लोट यूज किया होता तो मैं यहाँ पे भी फ्लोट यूज करता. ऑलवेज रिमेंबर, आपको जैसा डेटा टाइप के लिए पॉइंटर स्टोर करना है, आपको उसी डेटा टाइप का पॉइंटर लेना पड़ेगा. सो आई जस्ट क्रिएटेड अ पॉइंटर, and what I'll do now is I'll say pointer, I'll name it, this is variable name, कुछ भी नाम दे सकते हो. and after that you have to give it, जब आपको कोई वैल्यू असाइन करनी है, आपको इसकी वेरिएबल की एड्रेस असाइन करनी पड़ेगी, जिसके साथ आपको इस पॉइंटर को लिंक करना है. सिंस आई वांट टू लिंक इट टू माय वेरिएबल बॉन्ड, I'll say $bond. Cool. And just like that, guys, we have created our first pointer which is connected to the variable bond. अब चलो, अब हमने पॉइंटर कनेक्ट कर लिया. लेट्स जस्ट वेरीफाई. अब यहाँ पे मैं इतना एम्परसेंड ऑपरेटर यूज करने के बजाय आई जस्ट से ptr, ठीक है. आई जस्ट से ptr and I'm going to execute the code, and you can see we are going to get exactly same output, because the pointer variable hold can store address and it can display the address. अब guys, you might be thinking कि एक बार बिना पॉइंटर का ट्राई कर लेते हैं कि क्या वैल्यू आने वाली है, ठीक है. नाउ तुम देख लो, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है. देयर विल बी एन एरर, इनवैलिड कन्वर्जन फ्रॉम इंटीजर पॉइंटर टाइप टू इंटीजर. दिस इज द एरर दैट यू विल गेट अगर आप एक इंटीजर वेरिएबल में एक इंटीजर पॉइंटर टाइप का वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करोगे. बिकॉज यही हो रहा है, जब एक एड्रेस रिटर्न होता है, देन C++ ऑटोमेटिकली एज्यूम करता है कि इसको स्टोर करने के लिए हम एक पॉइंटर देने वाले हैं. बट सिंस मैंने यहाँ पे एक एस्ट्रिक हटा दिया था, तो उसको पॉइंटर मिला नहीं, एंड इसलिए एरर हो गया. सो आई जस्ट फिक्स द कोड, एंड दिस कोड टिल नाउ इट्स परफेक्टली फाइन, ठीक है. अब हमने दो चीजें कर लिया. हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, हमने पॉइंटर को वेरिएबल से कनेक्ट कर लिया. बट नाउ हाउ टू यूज द पॉइंटर एंड प्ले विद द वैल्यू. क्योंकि अभी हम जब पॉइंटर यूज करते हैं तो सिर्फ एड्रेस प्रिंट हो रहा है, बट हमें एड्रेस से मतलब, या एग्जैक्टली हमें एड्रेस से मतलब है, बट without the address, with the address we also want to play with the values. So how to do that? ये basically pointer declaration का technique है, the syntax. But internally guys कुछ ऐसा हो रहा है. So just assume that okay, so guys just assume that this value here is the visualization. So यहाँ पे हो क्या रहा है, ये हमारा वेरिएबल है. जस्ट एज्यूम दैट दिस इज वेरिएबल बॉन्ड, और बेटर आई शुड मूव टू द नेक्स्ट पिक्चर, ठीक है. सो गाइज कुछ ऐसा एज्यूम करो, दिस इज आवर वेरिएबल 7 जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, उसमें वैल्यू है 7. सो ये मेमोरी में कहीं पे डिक्लेयर्ड है. अब मैंने सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए पूरा हेक्साडेसिमल एड्रेस नहीं लिखा, मैंने सिंपल रैंडम वैल्यू लिख दिया 8000. दिस कुड बी एनीथिंग, हमेशा दिस इज गोइंग टू बी अ यूनिक वैल्यू. सो मैंने यहाँ पे एक वैल्यू लिख दिया 8000, and 8000 है basically this variable bond का address. The address of this variable bond, let's assume it is 8000, and उसके अंदर value है 7. So ये memory में कहीं पे declared है,
एंड ये जो हार्ट शेप है इसको एज्यूम कर लो ये आपकी जो एलोकेटेड मेमोरी है ना 4 बाइट्स की, इंटीजर की साइज 4 बाइट्स होती है. तो जहां पे भी मेमोरी में डिक्लेयर्ड है, लेट्स एज्यूम कि दिस इज दैट, दिस हार्ट इज सिग्निफाइंग दैट एड्रेस, दैट मेमोरी ब्लॉक. उसके अंदर वैल्यू है 7 और मेमोरी की एड्रेस है 8000. एंड जब हम पॉइंटर क्रिएट करते हैं, व्हेन वी क्रिएटेड अ पॉइंटर, दिस वैल्यू ptr, जैसे हमने पॉइंटर क्रिएट करा, पॉइंटर क्या करता है, इट इज गोइंग टू स्टोर द एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल. सो सिंस हमारे वेरिएबल बॉन्ड का एड्रेस था 8000 एंड हमने पॉइंटर ptr को उसके साथ लिंक करा विद दिस स्टेटमेंट, द मोमेंट दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, द एड्रेस ऑफ द पॉइंटर is stored inside, the address of the variable is stored inside the pointer. और पॉइंटर का खुद का भी एक एड्रेस होता है, क्योंकि वो खुद भी एक वेरिएबल है तो वो खुद कहीं पे स्टोर्ड होगा, बट उस एड्रेस से हमें इतना फर्क नहीं पड़ता. वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट वो क्या वैल्यू होल्ड करता है, एंड वो जो वैल्यू होल्ड करता है इज एक्चुअली नथिंग बट एड्रेस ऑफ द वेरिएबल जिसके साथ वो कनेक्टेड है. सो दैट इन अ नटशेल इज पॉइंटर्स. अब पॉइंटर्स को यूज कैसे करना है, सो इतना तो हमने देख लिया. व्हेन वी हैव अ वेरिएबल, अगर हम सिंपली वेरिएबल का नाम लिखते हैं, वी आर गोइंग टू गेट इट्स वैल्यू, एंड इफ वी अटैच एन एम्परसेंड सिंबल बिफोर द वैल्यू, देन वी आर गोइंग टू गेट द एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल, जो कि इस केस में 8000 है, सो मैंने एग्जांपल में 8000 लिखा. बट गाइस पॉइंटर के साथ यू कैन डू टू मोर थिंग्स. अगर मैंने सिर्फ पॉइंटर लिखा, इफ आई राइट ओनली द नेम ऑफ द पॉइंटर एंड प्रिंट इट, देन आई एम गोइंग टू प्रिंट द एड्रेस ऑफ द कनेक्टेड वेरिएबल. वो हमने यहाँ पे नोटिस कर लिया. मैंने सिर्फ ptr लिखा and we got its address. Okay, it's gone. One sec. Yeah, but we got its address. But if we compare it, pointer में एक extra functionality है. अगर मैं pointer से पहले ampersand लगाता हूँ, मुझे pointer का address मिल जाएगा, but मुझे pointer का address अब use करना है नहीं. This is what I'm interested in, and this is, guys, something that is one of the most crucial part inside pointer. ये एस्ट्रिक ऑपरेटर जब उसको पॉइंटर से पहले यूज करते हो, दिस इज कॉल्ड अ डी रेफरेंस ऑपरेटर. सो व्हाट डी रेफरेंस ऑपरेटर डज इज, ये पॉइंटर जिस भी वेरिएबल के साथ रेफरेंस्ड है उस वेरिएबल को डी रेफरेंस करो, मींस उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसे एक्सट्रैक्ट कर लो. सो सिंस आवर वेरिएबल पॉइंटर ptr इज कनेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर वेरिएबल, तो जब मैं ptr से पहले एस्ट्रिक यूज कर लूंगा ना, वो मेरे को पॉइंटर की वैल्यू एक्सेस करके देगा. यहाँ पे मैंने गलत वैल्यू लिखा है, इट इज 7, माय बैड. सो लेट्स सी दैट इन द कोड. व्हाट कैन वी डू विद द पॉइंटर वैल्यू, इंस्टेड ऑफ नाउ राइटिंग एड्रेस ऑफ वेरिएबल, आई विल से वैल्यू ऑफ वेर बॉन्ड एक्सट्रैक्टेड वाया पॉइंटर. And यहाँ पे instead of directly printing it out, I'll say star ptr. So this star is actually called the dereference operator. Dereference operator. Cool. Guys, any doubt till here? Okay, zoom in more. Shorten and zoom in more. And guys, are we all on the same page here? या किसी पे कोई doubt है? No doubt. Okay. Cool. So now what have we done in the code? हमने simple variable के name से value को access करा, हमने उसको एक pointer से connect करा. अगर मैं सिर्फ pointer का नाम लिखता हूँ, I'm going to get the address of the variable जिसके साथ वो connected है. And if I use this asterisk operator or the dereference operator, then I'm going to get the value of the variable जिसके साथ ये pointer connected है. Just fit this terms in your mind कि asterisk क्या कर रहा है and ampersand क्या कर रहा है, and pointer is going to be very easy for you. And guys, एक चीज मैं पहले बता दूं, pointer is one of the most important topics in C++ interviews. Like इसी में ही सारे tricky questions होते हैं, and we will look into that. We will also solve many interesting questions. So I'm going to execute this code, and okay, star ptr is equal to bond. Okay, sorry, मैंने गलती से मिटा दिया था, my bad. I'm going to execute it again, and you can see the output. यहाँ पे ये जो वैल्यू है 7, ये सिंपल बॉन्ड वेरिएबल से एक्सेस हुआ है, एंड ये वाली वैल्यू डायरेक्टली पॉइंटर के थ्रू एक्सेस हुई है. कूल. आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एंड कूल. सो guys, that is how you access a variable through pointer, and this is just another visualization. बेसिकली ये जो कंप्लीट बॉक्स दिख रही है आपको चारों तरफ, एज्यूम कर लो कि दिस इज द टोटल मेमोरी एलोकेटेड टू योर प्रोग्राम.
एंड व्हेन आई राइट प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, ये सब अलग अलग वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ये अलग अलग हार्ट्स अलग अलग वेरिएबल्स हैं, बेसिकली दैट मेमोरी ब्लॉक जो वेरिएबल को होल्ड कर रहे हैं. सो यहाँ पे हमारा वेरिएबल है बॉन्ड, किसी एड्रेस 8012 पे एग्जिस्ट कर रहा है. दिस इज जस्ट अ रैंडम एड्रेस, मैंने ऐसी एक वैल्यू लिखा है फॉर सिंप्लिसिटी. दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी हेक्साडेसिमल, सो इग्नोर दैट. उस वेरिएबल का एक एड्रेस है, उसके अंदर वैल्यू है 7. एंड ये हमारा पॉइंटर वेरिएबल है, इसका भी कुछ एक एड्रेस है. एंड गाइस कैन यू टेल मी इन द चैट कि जब मैं इस पॉइंटर को इस वेरिएबल के साथ कनेक्ट कर दूंगा बाय यूजिंग दैट एम्परसेंड सिंबल, तो पॉइंटर के अंदर क्या वैल्यू होगी? जस्ट पिंग क्विकली इन द चैट. Cool. So exactly. So concept of pointers is clear to every one of you. And these are few of the advantages जो हम कोड के साथ भी देख लेंगे. Pointer reduces your lines of code क्योंकि आप directly okay, इसको visualize ही कर लेते हैं कैसे lines of code reduce हो रही है. But before that, I want to show you something interesting. Pointers को हम arrays के साथ भी use कर सकते हैं, right? We can use our pointers with arrays. Not only variables, we can also use it with arrays. And guys, something जो आपको Google पे कहीं पे नहीं मिलेगा. This is just one of my टेक्निक जिससे मैंने arrays and pointers सीखा था. The definition of one changes when it comes to pointers. This is just one of my conclusion जो मैंने array से सीखा while using with pointers. Let's see what it means. Definition of one changes. हमें 1 का वैल्यू पता है, 4 plus 1 normally 5 होता है, but when it comes to pointer it is different. When you do +1 to a pointer, it is different than doing +1 to any other value. So let's see. Before that, एक बार कनेक्ट करके देखते हैं कैसे होता है. जब आप एरेज के साथ पॉइंटर कनेक्ट करते हो, बेसिकली जब आप एक एरे को एक पॉइंटर के वैल्यू में असाइन करते हो, तो वो पॉइंटर एरे का जो 0th इंडेक्स होता है, फर्स्ट वैल्यू, उसका एड्रेस स्टोर करता है. ठीक है, जस्ट कीप इन माइंड फर्स्ट वैल्यू 0th इंडेक्स का एड्रेस स्टोर करता है. सो लेट्स डिक्लेयर एन एरे हियर. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल से int arr I'm going to store 10 values is equal to, and मैं directly 5 लिख दूंगा. What this line will do is ये एक array बनाएगा of tens of size 10 and every value inside it is going to be 5. ठीक है. Now what I'll do here is मैं integer. So guys see, since my array is of type int, when I want to declare a pointer, okay हमने int पहले करा है, let's make it float. An array of type float. And इसके अंदर वैल्यू जाएगी 5.1. And guys, what I'm going to do here is if I want to create a pointer to a type float, I'll say float array pointer is equal to arr. Now guys see, मैंने यहाँ पे ampersand symbol इसके पहले नहीं लिखा because this is a type array. अगर मैं सिर्फ arr लिखता हूँ, वो automatically address को ही mean करता है. So saying ampersand is optional here. Keep in mind, array में हमें ampersand symbol नहीं लगानी पड़ती, वो automatically address को refer करता है because it is an array. So with that thing in mind, let's do something. What I'll say here is I'll create a for loop int I is equal to 0, I less than 10, and as we have discussed yesterday, there is a cool way to calculate the size of your variable. Size of your array, you can just say size of arr divided by size of arr of 0. So this will automatically calculate the size of the array. मुझे 10 specifically लिखना नहीं पड़ेगा, and I will do i++. And with that being done, मैं पे क्या करने वाला हूँ? I'll say okay, so I'll say cout index, and I'll write here I so that the output is going to be little meaningful. ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, I'll say सबसे पहले सिंपली हमें जैसे जो हमें पता है कि एरे पॉइंटर का सिंपली प्रिंट करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है. ठीक है, this is how we calculate extract the value to which the pointer is pointing. So मैंने सीधा यही लिख दिया. Let's run this code and see what's the output.
So you can see हमेशा सेम वैल्यू प्रिंट हो रही है एंड इट इज अगेन ऑफ कोर्स क्योंकि मैंने सबका वैल्यू सेम दिया है, थोड़ा सा डिफरेंट करता हूँ एंड लेट्स सी द आउटपुट. ओके, नो चेंज क्योंकि मैंने कोड सेव नहीं किया. सो गाइस बेसिकली हो ये रहा है कि हर बार ये जो वैल्यू है आई वो चेंज हो रही है, ठीक है, क्योंकि मैंने प्रिंट करते वक्त यहाँ पे आई लिखा हुआ है. I have actually written here I, तो वो वैल्यू चेंज हो रही है. But something that is not changing is, it will make more sense if I show it like this. Cool. Let's run the code and you will see what's wrong with the code. You can see every time it is printing 5.1. Guys, can anyone here tell me the reason why every time 5.1 print हो रही है? Exactly. Someone said I have to increment the pointer. So here is what I meant by the statement. Read the statement again. Sorry. Read the statement again. Definition of one has a different meaning in the context of pointers. So let's see what it means. अगर मैं यहाँ पे instead of writing array of pointer, I would have written pointer plus I. ठीक है. So first loop में क्या होगा? I का value 0 है. So array ptr plus 0, that is just the first value, सही print होगा. Next iteration में I का value 1 हो जाएगा. And of course array pointer plus 1. Now see array pointer plus 1 हो रहा है. So logically आपको लग रहा होगा कि एड्रेस में अगर 8000 है then it should go to 8001, but ऐसा नहीं होता. सिंस हमें पता है फ्लोट हो गया या इंटीजर हो गया, इनका साइज होता है 4 बाइट्स. सो पॉइंटर्स आर वेरी स्मार्ट. जब आप उनमें +1 करते हो, इंस्टेड ऑफ जस्ट चेंजिंग द साइज बाय 1, इट विल चेंज द साइज बाय द एग्जैक्टली इक्वल टू द साइज ऑफ द डेटा टाइप जिसको वो पॉइंट कर रहा है. सो उसका भी हम डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं. सबसे पहले देखते हैं इफ दिस कोड वर्क्स फाइन नाउ, एंड यू कैन सी अभी वो सारे वैल्यू सही प्रिंट कर रहा है. Now let's also print something. सीधा वैल्यू के अलावा I will also print the address. ठीक है, मैं साथ में उसका एड्रेस भी प्रिंट करूंगा. एंड टू डू दैट मेरे को बस एस्ट्रिक ऑपरेटर के अलावा बाकी सारे स्टफ को लिखना है. सो अभी मैंने यहाँ पे एस्ट्रिक ऑपरेटर नहीं दिया, यू कैन नोटिस. एंड लॉजिकली इट शुड, आई मीन थियोरेटिकली एंड ऑफ कोर्स प्रैक्टिकली इट शुड प्रिंट द एड्रेस. एंड एज यू कैन सी वैल्यू प्रिंट हो रहा है एंड एड्रेस प्रिंट हो रहा है सबके साथ. Now guys, I want you to notice something. Yesterday जब हमने array पढ़ा था, we used a term that arrays are contiguous. That is continuous block of memories में वो allocate होते हैं. And here you can see that practically. Look at the last value. It is 20. Look at the next value, 24. क्योंकि हमें पता है float का size 4 bytes होता है. So it is pointing to the exactly next memory block. First value is at 20. उसका size 4 bytes है. वहीं से नेक्स्ट ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है 24 से, वहीं से उसके बाद वाला 28 स्टार्ट हो रहा है. एंड इट इज रिटन हियर सी इज बेसिकली इन हेक्साडेसिमल, इट इज इक्वल टू 12. सो यू कैन से दैट 8 के बाद एक 12 आ रहा है यहाँ पे, एंड देन आफ्टर दैट 0, बिकॉज हेक्साडेसिमल में 15 तक होता है. सो 13, 14, 15 एंड देन 0. So it is in hexadecimal, but you can see in the first 3 values, value is changing by unit of the data type that we have used. To make it more clear, अगर मैं यहाँ पे long int use किया होता, and I just correct it here, and I'm going to change the type of pointer to long int as well, when it is going to be an error. And if I run this code again, you can see now the values are changing by 8. First value is 60, next value is 68. And guys, that is what I meant. यहाँ पे हम अभी भी +1 कर रहे हैं, but the value is of the pointer is changing by the data size of the data type. So just read this statement again. Definition of 1 has changed. जब आप pointer में +1 करते हो, it is not equivalent to अपना arithmetical +1. Pointers में +1 means the next memory block in the array. So guys, if there are any doubts still here, then ping me in the chat, or else from here Kshitij sir will teach you some deep insights about pointers.
why don't you use ptr plus plus in the increment expression? Yeah, of course I can do that. I can use pointer plus plus and it will be changing itself to the next address, and I would have done that. It but उसमें कभी कभी एक error ये आती है कि let's say your value I is working at a different rate. I mean यहाँ पे तो मैंने I plus plus करा है, so जब मैंने यहाँ पे plus I लिखा, it is working exactly similar thing. एंड समथिंग एल्स गाइस, अगर मैं पॉइंटर प्लस प्लस करते रहता हूँ देन मेरा एरे पॉइंटर जो बेसिकली मेरे बेस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, आई विल लूज दैट. आई विल गिव यू वन क्विक एग्जांपल सिंस इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था. मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दिखाता हूँ. सी आउट बेस एड्रेस and we know the base address of our pointer is present here क्योंकि हमने वहीं से इनिशियलाइज करा था. So I'm going to print arr ptr n9. ठीक है, cool. So what I'm going to do is I'll run the code again and you can see this was the first address. ठीक है, इंडेक्स 0 का ये एड्रेस था जैसे नॉर्मली प्रिंट हुआ था, एंड जब मैंने लूप के बाहर बेस एड्रेस लिखा यू कैन सी सेम एड्रेस प्रिंट हो रहा है. जस्ट लुक एट द लास्ट 4-5 डिजिट्स fc5b0 fc5b0. एंड द ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग array ptr plus plus इन पॉइंटर्स, बाकी नॉर्मल वेरिएबल्स में चलता है, but if I do this in pointers you will see the difference. I will run the code again, and guys this is what the drawback is. You can see right now the first index, the value of the first index is ec18, and अगर अभी मैं loop के बाहर base address check करूं it has changed. So that is the drawback of using प्लस प्लस. वो बेस एड्रेस को जो हमारा ओरिजिनल वेरिएबल है उसी को चेंज करता रहता है, बिकॉज वी नो प्लस प्लस मीन्स array ptr is equal to array ptr plus 1, अपने आप को चेंज कर रहा है एंड देयर विल लूज द बेस एड्रेस. तो हम आगे उस एरे को अगर यूज करना होगा वी अगेन हैव टू क्रिएट अ न्यू पॉइंटर और वी अगेन हैव टू इनिशियलाइज द वैल्यू. इसीलिए आई नॉर्मली डू नॉट यूज प्लस प्लस. You are you are free to experiment around it, but मैं recommend करूंगा you use plus I so that base address is safe, it does not change. Divisam, there is another question. Can we use star PTR without defining PTR? I think. Without defining PTR, okay, now that is going to be error, because अगर मैंने PTR define नहीं किया होता मैं simply उसका point address print करता. Let's say मैंने simply declare कर दिया and here I'll print cout array ptr. You can see that there is going to be some garbage value, probably garbage in hexadecimal. So let's look at that. कहाँ गया? मैंने कहाँ पे लिखा था? The first line extracted via pointer. Yeah, you can see that pointer is actually pointing to some garbage value, and you can see array pointer जो हम array create कर रहे थे, which logically should be connected to array pointer, but since अभी pointer हमारे array से connected नहीं है, so it is printing out garbage value. It's printing out any random value जो probably उस memory address में पहले से पड़ा हुआ था. So that is the difference if I do not initialize a pointer. I hope that answers your question. Yes, Divisam, I think that seems fine. And now let us continue further to the next topic. And guys, it is a request to you that please like and subscribe like the video and subscribe the channel, which motivates us for a better cause. तो चलो अब थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. अभी जैसे दिव्यसोम हैज इंस्ट्रक्टेड यू अबाउट द पॉइंटर्स, तो अभी पॉइंटर्स में ही आते हैं. तो अब थोड़ा मेमोरी लेवल पे डिस्कस करते हैं कि व्हाट वी आर डूइंग इन द पॉइंटर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा जितना भी मेमोरी है, दिस इज अवर रैम. जो ये पूरा एरिया है हमारा, दिस इज अवर रैम. So our RAM is mainly divided into three of the major area. One is heap memory, one is stack memory, and another is the code memory. तो हमने अभी तक जितना भी कोड लिखा, everything that we have written is present in the code memory. The code which we have written is present inside the code memory. अब ये कोड था, जैसे मेरा मेन फंक्शन था और बाकी चीजें जितनी भी हमने लिखी, लाइक एक मैं सिंपल सा कोड लिखता हूँ, hashtag include
equal to 10, C equal to 11, and C equal to 12. आई थिंक ये कोड तो सबको इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा। इस कोड में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब इस कोड को देखते हैं। लेट अस सी इट साइड बाय साइड। लेट मी स्प्लिट माय विंडोज। तो अभी ये कोड है, दिस वाज माय कोड एंड दिस वाज द डायग्राम व्हिच इज दिस। तो हमारा जो ये कोड है, द कोड व्हिच इज हियर, लाइक द कोड दैट इज हियर, it this code is loaded into the code memory. This code is loaded here, like it is present in the RAM for execution. The variables which are present here, A, B, and C, which have the value 10, 11, and 12. So the value to the variables will be allocated here. Variables are allocated memory in the stack memory. And further, the memory which is left after the execution of a program, after the loading of the code, after the stack, all the memory is the heap memory which is left. Okay, so this is the heap memory. तो अब हमारा जो प्रोग्राम है, that is why हमारा प्रोग्राम can access only the things which are present in the scope of the memory. तो इस प्रोग्राम के जो स्कोप में है, these are the variables which are defined here only. Why are we providing double inverted commas between? Okay, we are providing double inverted commas to give spaces between the things, or else it will be like 10, 11, 12, and there will be no spaces between them. So we are providing double inverted commas with a space to provide some of the spaces between the values. I think that that answers your question, Tushar. Thakur, Avneet. Yes, Khushi, to make it more readable. So the code section is present in our code memory, and the scope of the program is still the stack memory only. But we have seen some of the programs that are able to access the printers, that are able to print something out, that are able to access the files, that are able to organize our files. How we are able to do that? All the things are present in our heap memory. And how to access the heap memory? So here comes the concept of pointer. Only pointers do one thing, that they access the heap memory. So all the data that is present in our heap memory can be accessed using pointer. अब मैं बोलता हूँ कि ये वेरिएबल्स तो मैंने पहले से ही डिक्लेयर कर दिए थे एंड दे वर प्रेजेंट इन द स्टैक मेमोरी एंड Divyasam has also instructed you about something that he has declared a pointer and pointer is pointing to something. So that pointer is also, for example, int star ptr is equal to a. So it is pointing to something in the memory itself. For example, this was ptr and it was a. So the pointer was pointing here. Let me clear the screen a little bit so that it is more easily understandable. So let us see it now. So what we have here, we have a pointer ptr, like this is the pointer and this is the memory of A. So whatever pointer is doing, it is pointing from the stack memory to another object inside the stack memory. अब हमको क्या करना है? We want to access the heap memory. So let us create a variable in the heap memory. आज तक अभी तक जितने भी हमने variables declare किए हैं, all the variables that have been declared till now are in the stack memory. So now let us work with the heap memory as well. तो अब हमको heap memory में variable declare करना है. So what will be the syntax for that? So we will use int star ptr is equal to new int and I will give a value 5. So a integer of a array will be created. New int. New int is the
syntax here, new. So, so it will create a now let us access a pointer. Okay, RPTR. Oh, it was already initialized, so it was giving error. तो अभी हमारे इसने इस पॉइंटर ने क्या किया, दिस पॉइंटर क्रिएटेड एन एरे ऑफ साइज 5. so it has created an array of size 5 in the heap memory. तो जो अब हमारा मेमोरी ये क्रिएट हुई, this is created here. So an array is created in the heap memory and now this is being done. तो जो अब हमारा पॉइंटर ने काम किया, that has allocated an array in the heap memory. Which variable stores in heap memory? The variables which are created by pointers are stored in the heap memory, and by default the location is in stack memory. Yes, Khushi, this is completely correct. So it has created an array in the heap memory itself. वो pointer से array को access कैसे करना? I think that Divyaswam has told you earlier. Can you please zoom out the code? Okay, zoom out the code. I think now it is clear. तो अब हीप मेमोरी को हमने एक्सेस किया यूजिंग द पॉइंटर. अब पॉइंटर्स को यूज करते हुए देर आर सम ऑफ द एरर्स दैट कम विद द पॉइंटर यूसेज. तो हम उनको भी स्टडी करते हैं ताकि हमारे साथ वो एरर्स ना आए. ये 3 मेजर एरर्स हैं जो हम पॉइंटर्स यूज करते हुए everyone face while using the pointer. So first of all कि I have declared a pointer. This is a pointer ptr and I have declared it. How I have declared it? Let us see. I have declared a pointer in star ptr. तो अब इसमें क्या इशू है अगर मैंने इन स्टार पीटीआर एक डिक्लेयर कर दिया तो? द इशू इज दैट इट इज पॉइंटिंग टू सम ऑफ द गार्बेज वैल्यू. द वैल्यू दिस इज पॉइंटिंग टू इज गार्बेज. तो अब हम हमारे ये अनइनिशियलाइज पॉइंटर हो गया एंड वी कैन एक्सेस इट टू चेंज समथिंग इन द फाइल. फॉर एग्जांपल एक मेरा पॉइंटर है. पॉइंटर तो हीप मेमोरी पे काम करता है, सो इट विल एक्सेस ऑल द फाइल्स दैट आर प्रेजेंट इन द सिस्टम. और ये मेरा पॉइंटर किसी ऐसी फाइल को एक्सेस कर रहा है जो हमारी किसी हमारे सिस्टम फाइल को एक्सेस कर रहा है. एंड वी ऐड समथिंग इनटू द पॉइंटर, वी ऐड 1 into the pointer and we add something at the value of that. So all of the our system will crash. So uninitialized pointer is a very dangerous concept. तो uninitialized pointer को solve करने के लिए we have something. We will use int star ptr equal to capital NULL. So what is null here? Null is like the pointer is pointing to nothing. Null is a thing in the C++ which points to nothing. Null is a memory location that is pointing to nothing. So it is pointing to nothing now. So every time while creating a pointer, we should initialize it with null. Now further coming to the memory leak. अब दिव्यस्वाम ने आपको एक चीज बताई होगी कि we can create a pointer. I have created a pointer, but now here I have used the pointer and I do not need the pointer further. So what we will do? So I will use v and I will type ptr. So what it will do? What freeing the pointer will do? It will go to the space in the memory and it will automatically delete it. So the space in the heap will be freed.
So memory leak will not be there, because memory leak happens when the space in the memory is allocated even after the execution of the program, or even after the variable is completely used. So I will, after deleting the pointer, what I will do in memory leak, what we should do, so we should free the pointer after using it, and after using the pointer, we have, after freeing the pointer even, we have to initialize it to null, so that it does not point to the garbage access. Is declaring null same as the wild pointer? Wild pointer is something that is accessing somewhere which it does not need to access. So we have to stop wild pointer. And now there is dangling pointer. Dangling pointer, here is the concept of the memory leak, and dangling pointer is completely shown here only. So after freeing the pointer can also access the same memory location. So to stop the dangling pointer, as the pointer is now dangling, so it was once pointing to something useful and it is now not pointing to something useful. So we have to stop the pointer from pointing to that of the file. So we use the concept of dangling pointer. Dangling pointer is a pointer which was once pointing to some of the favorable location but is now pointing to some of the garbage value. So we need not to change it, and we use ptr is equal to null. And in C++11, since C++11 there is a better concept called null ptr. So we can also use ptr is equal to null ptr. This is a good concept, and if someone knows about null, so he can use null and null ptr both. But null ptr is a better and advanced concept, so we should use null ptr instead of null. Yeah, memory leak, please explain once again. Okay. I am explaining the memory leak and uninitialized pointer, and I am explaining everything once again also. So no need to worry about it. Let me erase it first. Using dangling pointers, we can point to different data types, say value using. Actually, the pointer can point to anything if you ask them. The pointer can point to anything. The data types are nothing but the data type is the difference in the memory allocated. For example, int is a 4 byte memory and a double is a 8 byte memory. So if we access if we use an integer pointer to access a double, its first 4 bytes will be accessible and rest of the 4 bytes will not be accessible. So that's why we have to use a different data type. अब अनइनिशियलाइज्ड वैल्यू की बात करते हैं. तो अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर क्या होता है कि वी हैव डिक्लेयर्ड अ पॉइंटर हियर बट इट इज नॉट इनिशियलाइज्ड एंड इट इज पॉइंटिंग टू सम ऑफ द गार्बेज लोकेशन. टू स्टॉप इट, we will point it to the null so that it does not point to anywhere else. ठीक है. अब अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर ये क्लियर है सबको? प्लीज पिंग इट इन द कमेंट सेक्शन. इज अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर क्लियर टू एवरीवन? Is uninitialized pointer clear to everyone? Okay. तो अब uninitialized pointer clear है. नाउ कमिंग फर्दर टू द मेमोरी. अब मैंने ये पॉइंटर बनाया था स्टार पीटीआर, और ये स्टार पीटीआर मैंने यूज कर लिया. तो अब मेरे को इस पॉइंटर को फ्री करना पड़ेगा. अगर मैं फ्री नहीं करता हूँ देन व्हाट हैपन? तो जो हमारी हीप मेमोरी है, सपोज माई हीप मेमोरी इज 5 GB एंड आई हैव 1 GB ऑफ पॉइंटर्स, मतलब एक मेरा बहुत बड़ा प्रोग्राम क्रिएटेड है. तो ये 1 GB मेरी मेमोरी के अंदर जगह लेंगे. इट विल टेक द प्लेस इन माई मेमोरी टिल द प्रोग्राम इज कम्प्लीटली एग्जीक्यूटेड. और देर आर सम ऑफ द प्रोग्राम लाइक गूगल इज रनिंग अ सर्च प्रोग्राम. तो वो सर्च प्रोग्राम को तो कभी स्टॉप कर ही नहीं सकते ना. तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मेमोरी विल बी कम्प्लीटली फुल. देर इज मेमोरी अवेलेबल विद अस बट द मेमोरी इज कम्प्लीटली फुल. So that concept is called memory leak. That the memory is leaked. So this concept is called memory leak. To prevent memory leak, we need to use a free operator and we have to free the value of the pointer. So is the concept of memory leak clear now?
Yes, yes, you are right completely. An initialized pointer means that no value is assigned. So the memory leak is also clear now. And now let us come to the dangling pointer. So even after the pointer was cleared, it was pointing to something. Only the memory is free, but the pointer is still pointing to something. So to stop the pointer from pointing to something, we have to use ptr equal to null again to stop the pointer from pointing to anything. So this is the concept of dangling pointer. Dangling pointer is that when the memory is already freed, but the pointer is still pointing to something. So to stop the pointer from pointing somewhere, we use ptr equal to null. So is dangling pointer clear? Yes, this was not the case. I was showing the free is a function. Free is used in C only, as Nitish has told. We use delete function in C++, but I was only clearing the syntax here. Actually, it is not the code, it is the syntax that I was clearing. Okay. So अब pointers के concept को let us finish it now, and we will also give you some of the questions about the pointer. You should try the questions and we will share it in your WhatsApp group. अब थोड़ा और concept पे आते हैं जो पैटर्न का कॉन्सेप्ट है. लाइक सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर आस्किंग फ्रॉम द बिगिनिंग कि पैटर्न के क्वेश्चंस करवाओ, पैटर्न के क्वेश्चंस करवाओ. सो नाउ लेट अस बिगिन विद द पैटर्न. तो अब पैटर्न का क्वेश्चन है कि ये मेरे को पैटर्न बनाना है. फर्स्ट लाइन 1 स्टार, सेकंड लाइन 2 स्टार, थर्ड लाइन 3 स्टार, फोर्थ लाइन 4 स्टार एंड फिफ्थ लाइन 5 स्टार. तो एनी आइडिया कि ये पैटर्न का क्वेश्चन कैसे होगा? हाउ विल वी अप्रोच दिस? अब मेरे को क्या करना है? व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू आस्क द यूजर. एक मेरा यूजर है, आई विल आस्क द यूजर how much line to print. Okay, okay. I am showing the code once again. I think code was there was no code written about the pointer. There were some of the concepts which were taught to you. So I think today was there no of the code was there. Okay, I am zooming the screen a little bit. So is the screen now clearly visible? Is the question now clearly visible? देखो कुलदीप, arrays का यूज नहीं करना है. If we have to store the pointers, we will. If we have to store the pattern, we will use the concept of array. But if we have to print it directly, we need not to store it. So we will use the concept of nested for loop. Okay. So we will ask the user how much lines to print. If the user has asked 2 lines, so we will only print these 2 values. If the user has entered 3 lines, so we will print these values. If the user has entered 4 lines, we will also extend the Pascal triangle. No need to worry about that. Thakur Avneet, the code will be shared in your group, so no need to worry about that. And let me show the code once again also. So this was the code which was written for expressing the pointer. And to free, okay, delete was here. Delete PTR. This was the complete code, correct code. So here it is the array, and it is printing only the address of the array. To access the value of Division has already told you that we need to use star operator here to access the array. चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं जो अभी हम देख रहे थे. अब इसके ना फॉर लूप का यूज करके लेट अस प्रिंट द वैल्यू. एक बेस कोड है, बेस कोड लिख लेते हैं. तो हमारा बेस कोड हो गया. सबसे पहले अपने को क्या करना है? वी हैव टू आस्क द यूजर अबाउट द वैल्यू. कैन वी अप्लाई सॉर्टर? इसके अंदर सॉर्टिंग क्यों करनी है भाई? ये प्रिंट करवाने के लिए. जब जब तक हमको कोई चीज़ स्टोर नहीं करनी ना, वी नीड नॉट टू डू एनीथिंग. तो लेट अस सी. हम लॉजिक समझते हैं इसके पीछे कि हाउ टू अंडरस्टैंड दिस.
तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया नंबर ऑफ लाइन। और एक और चीज की कमेंट्स के बारे में, आई थिंक यू ऑल नो अबाउट द कमेंट, बट we have to use the variable same, like I am using the variable name number of lines here. So the number of line variable is already defining itself, so I need not to use the comments here because the number of variables where variable is completely already defined. तो हम क्या करेंगे अब, let us take a input number of line. तो अब हमने यूजर से इनपुट ले लिया about the number of the line. Yes, I will. Please remove. Okay. I am removing the comment. Wait, sorry for the issue. Is the screen? No, I think now the screen will be visible, and let me remove the name also. Now the screen will be clearly visible. तो अब हमने यूजर से इनपुट ले लिया अबाउट द नंबर ऑफ द लाइंस जिस पे उसको काम करवाना है, कितनी उसको लाइन प्रिंट करवानी है। तो अब हमको लाइन प्रिंट करवानी है, तो सबसे पहले हम लाइन को देखते हैं। अभी हम पैटर्न को भूल जाओ, सबसे पहले आपको क्या करवाना है, जितनी यूजर ने लाइन बोली उतनी लाइन प्रिंट करवानी है। तो लेट अस स्टार्ट विद int I equal to 0 and I is less than number of line and I plus this। तो जब आप अप्रोच पूछ रहे थे आप में से कुछ लोग, तो लेट अस सी की अप्रोच कैसे बनती है। किसी भी कोड को लिखने के लिए अप्रोच कहाँ से आएगी, किस तरह से हम अप्रोच बनाएंगे, तो आज अप्रोच पे काम करेंगे। तो अभी मैं देखता हूँ इस कोड को चला के व्हाट इज हैपनिंग है। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ नंबर ऑफ लाइन्स प्रिंट किया, C++001, that is the current code। Let us wait for it to come। I mean in the question we are printing the array, can we use for this? In which question we are printing the array, Vishal, can you please specify? I have removed the content of। तो अब मैंने यूजर वैल्यू डाली 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 5 स्टार प्रिंट कर रहा है कि नहीं, तो इट इज प्रिंटिंग 5 स्टार। तो पहले मेरा कॉन्सेप्ट, तो मेरा सबसे बेसिक चीज थी दैट वाज रिक्वायर्ड हियर वाज टू प्रिंट द नंबर ऑफ द लाइन, 5 नंबर ऑफ लाइन। अब इन एवरी लाइन वी हैव टू प्रिंट द पैटर्न ऑफ स्टार। तो एक बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं, इससे भी एक बेसिक क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि हमको क्या करना है। दैट वी हैव टू प्रिंट अ पैटर्न, यूजर जितनी भी लाइन एंटर करता है उससे में हमको स्टार प्रिंट करना है। तो ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन होगा। सो व्हाट वी विल डू हियर, हम उतने स्टार्स को प्रिंट करवा देंगे। तो व्हाट विल हैपन, एक स्क्वायर बन जाएगा जितने यूजर नंबर एंटर कर रहा है उस। तो आई थिंक द कोड ऑफ द स्क्वायर विल बी क्लियर। तो स्क्वायर वाला कोड की स्क्वायर कैसे बनेगा, ये वाला कोड तो क्लियर है। I mean the question in which we are printing the array can be sort. Yes, we can use sort to print the array. Why will we sort to print the array if it is not required? If it is required in the program, then we will use sort। तो अब इसने 5 स्टार प्रिंट कर दिए, पर अब इसके लिए तो मेरे को ये सी आउट स्टार प्लस स्टार लिखना पड़ रहा है। बट नाउ देयर इज अ कंडीशन, वी कैन यूज सी आउट, और सी आउट के अंदर हम सिंगल ही स्टार दे सकते हैं, वी कैन नॉट यूज 5 स्टार। अब हम क्या करेंगे, हाउ विल वी डू इट, अगर हमारे पास एक कंडीशन है कि हम सी आउट के अंदर एक सिंगल ही स्टार दे सकते हैं। एनी आइडिया अबाउट इट? प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। इफ वी आर गिवन a condition that we can use, yes, we can use one more loop, which you are completely right, we can use one more loop inside it। So let us use another loop also for int j equal to 0 and j is less than number of lines। तो अब हमने यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन्स क्यों यूज किया, एनीवन हु कैन टेल कि हमने नंबर ऑफ लाइन्स क्यों यूज किया यहाँ पे? क्योंकि हमको एक स्क्वायर प्रिंट करना था, तो जितनी हमारी रोज बनेंगी उतने ही हमारे कॉलम्स बनेंगे। तो वी हैव यूज नंबर ऑफ लाइन्स हियर अगेन। तो अब हम इसको चला के देखते हैं। पैटर्न के क्वेश्चन भी सबको समझ में आने हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक। तो
अब इससे ज्यादा बेसिक पे तो कुछ है ही नहीं पैटर्न में। और अगर इतनी चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं कि वाई वी आर यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप और हम क्या क्या चीजें कैसे करें, तो पैटर्न का कितना भी एडवांस क्वेश्चन आ जाए यू कैन सोल्व। तो अब इसके अंदर क्या दिक्कत है कि ये सिंगल सिंगल लाइन में प्रिंट कर रहा था, व्हाई इट वाज देयर। अब हमको स्क्वायर प्रिंट करवाना था बट इट हैज प्रिंटेड अ सिंगल लाइन। अब इसने सिंगल लाइन क्यों प्रिंट किया, क्योंकि हमको 5 स्टार एक लाइन में प्रिंट करवाने हैं, देन वी हैव टू गिव ए नेक्स्ट एंडल। तो अब हमने क्या किया, हमने इस एंडल को यहाँ से हटा लिया बिकॉज वी वांट टू प्रिंट द एंडल आफ्टर द 5 स्टार्स आर प्रिंटेड। अब मेरे को एंडल कब प्रिंट करना है, 5 स्टार प्रिंट हो जाएंगे मेरे, और यहाँ पे इस लाइन में मेरे 5 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। अब इसके बाद मेरे को एक एंडल करना है, तो आई विल एंड द लाइन हियर। ठीक है, अब इस एंडल से क्या होगा, मेरा जो होगा आउटपुट दैट विल बी करेक्ट। अब क्यों करेक्ट होगा, बिकॉज आई एम एंडिंग द लाइन आफ्टर प्रिंटिंग 5 ऑफ द स्टार। Yes, so handle in the outer loop will work here. So now the handle in the outer loop is satisfying it. तो अब हमको बिल्कुल बेसिक समझ में आ गया कि why we are using handle in the outer loop. तो अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं. This question is completely clear. I think the square question is completely clear. If any doubts in the square question, you can ask in the comment section. And I am continuing further with the triangle question. तो अब triangle वाला क्वेश्चन है हमारा. अब हमको क्या करना है, फर्स्ट लाइन है हमारी, उसके अंदर हमको कितने प्रिंट करवाने हैं, सिंगल स्टार प्रिंट करवाने हैं, एंड इन द सेकेंड लाइन हमको 2 स्टार प्रिंट करवाने हैं। तो अब हमारे क्या होगा कि जो हमारा लाइन नंबर होगा दैट इज आई, आई इज अवर लाइन नंबर, हमको उतने ही स्टार प्रिंट करवाने हैं। तो हम क्या करेंगे कि जे इज लेस देन आई, बट जे इज लेस देन आई करेंगे हम, तो उससे क्या चेंज आएगा कि 0 इज लेस देन 0, ये तो कंडीशन पहली बार ही फॉल्स हो जाएगी, बट वी हैव टू यूज मिनिमम 1। तो वी विल यूज j इज लेस देन इक्वल टू आई है। तो अब क्या होगा हमारा, जब ये 0 है और ये भी 0 है, देन व्हाट विल हैपन कि वो सिंगल टाइम प्रिंट करेगा। लेट अस सी इट इन एग्जीक्यूशन, और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते हैं एक बार एग्जीक्यूशन के बाद। डॉट प्लस डॉट, तो अब क्या कर रहा है ये 1 2 3 4 एंड 5, ये ऐसे स्टार प्रिंट कर रहा है। हाउ इट इज हैपनिंग, हाउ इट इज चेंजिंग, पहले हमने जे इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस कर दिया था, तो ये लूप कितनी बार चल रहा था, 0 से लेके नंबर ऑफ लाइंस तक द लूप वाज रनिंग। बट अब लूप कहाँ से चल रहा है, पहले 0 था, 0 के लिए एक बार लूप चला, बट देन 0 to 1 चला लूप, फिर 0 to 2 चला लूप, फिर 0 to 3 चला लूप, फिर 0 to 4, फिर एंड देन एट लास्ट 0 to 5। तो इसके अंदर j इज लेस देन इक्वल टू आई हो, ये हमारा लूप उसी के अकॉर्डिंग चला द नंबर ऑफ टाइम्स वी वांटेड टू प्रिंट। एनी एनी ऑफ द डाउट इन द कोड टिल नाउ, किसी भी पैटर्न में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज एक बार बता दीजिए सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है देन वी विल प्रोसीड विद द सेकंड पैटर्न क्वेश्चन। ओके, तो अब किसी को डाउट नहीं है तो लेट अस मूव टू सेकंड पैटर्न क्वेश्चन। अब हमको क्या करना है कि हमने कोड तो बना ही लिया था, बट नाउ व्हाट वी नीड टू डू, हमें क्या करना है, स्टार की जगह 0101 का पैटर्न प्रिंट करना है। तो लेट अस प्रोसीड विद द 01 पैटर्न। अब इसके बारे में सोचते हैं कि हाउ 01 पैटर्न विल बी प्रिंटेड। तो बेसिक कोड में लिख लेते हैं। अब हमको ये 01 का पैटर्न प्रिंट करना है। तो अब 01 का पैटर्न हाउ मच टाइम्स वी वांट टू प्रिंट इट, वी वांट टू प्रिंट इट n टाइम्स, और n टाइम्स यूजर इनपुट देगा। तो लेट अस सी कि n टाइम्स वो कैसे होगा। तो गाइस वेट अ मिनट, okay, now your doubts are clearly visible to me. There was some of the issue. तो अब हमने क्या किया, int n वेरिएबल डिफाइन कर दिया, एंड वी हैव asked the user for the input n।
अब यूजर्स ने इनपुट n भी दे दिया था एंड ये पूरा का पूरा कोड कॉपी कर ही लेते हैं क्योंकि सेम कोड विल बी एक्सेसिबल देयर। अब हमने क्या किया, आई थिंक इतने कोड में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी because this is simply the star pattern which we have printed earlier. Okay, it is asking for the value. तो स्टार पैटर्न ट्राइंगल में इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब हमने क्या किया, एक हमने आई थिंक दिस इज क्लियर। ओके ओके ओके, दिस इज क्लियर। तो अब हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल ले लिया इंट, इंट बूल ले लिया, बूल 1 इज इक्वल टू ट्रू। तो अब हमारा बूल वेरिएबल होगा व्हाट बूल 1 विल डू। सबसे पहले हमको एक लाइन प्रिंट करवानी है विच इज स्टार्टिंग विद 1। तो हम अपने वेरिएबल को 1 से स्टार्ट करवाएंगे और जब हमारी लाइन 1 वाली होगी हम इस 1 वेरिएबल को ट्रू कर देंगे एंड इन द नेक्स्ट लाइन वी वांट टू स्टार्ट विद 0। तो जब हमको नेक्स्ट लाइन में 0 से स्टार्ट करना होगा देन वी विल टर्न द बूल वेरिएबल टू फॉल्स। और हमको पता चल जाएगा कि बूल वेरिएबल अगर फॉल्स है तो हमको स्टार्ट करना है 0 से। अगर फिर हमको नेक्स्ट लाइन फिर से शुरू करवानी है तो देन वी विल अगेन टर्न द बूल वेरिएबल टू ट्रू एंड देन फिर 0 एंड देन 1 अगेन। तो अब हम इसी तरह से थोड़ा काम करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट। अब हमने क्या किया कि हमारा बूल को फर्स्ट ऑफ ऑल बूल ट्रू तो हमारा इनिशियलाइज ही था, हमने लास्ट में आके क्या किया, बूल 1 इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ 1। तो इस लाइन का मतलब क्या होगा 1 इक्वल टू नेगेशन ऑफ 1। अगर मैं ये करूंगा तो सिर्फ यही करते हैं। लेट अस रिमूव दिस एंड सी द आउटपुट कि इसका आउटपुट क्या आएगा। लेट अस प्रिंट 1 सी आउट 1 एंड लेट अस रन द कोड एंड सी कि अब इस कोड का आउटपुट हमारा क्या आएगा। तो हमारा जो आउटपुट आ रहा है दैट इज 10101, मतलब ऐसे हमारा आउटपुट आ रहा है। तो जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं वो गिविंग टू, ओके ओके, इट इज गिविंग 200। so let us move 100 and run the program again। we are using 5 values। तो ये हमारी ऑल्टरनेट वैल्यूज आ गई हैं 10101। तो अब हमारे पास ऑल्टरनेट वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। अब ऑल्टरनेट वैल्यूज आ गई, अब हमको इसके अंदर प्रिंट करनी है वैल्यू। तो अब इसके अंदर हम प्रिंट कैसे करेंगे वैल्यू। अब इसके अंदर तो हम एक और फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज सॉरी आई वाज ऑलरेडी डिक्लेयर। तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमने कौन से वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं। जे इज लेस देन इक्वल टू आई एंड जे प्लस प्लस। तो सबसे पहले हमने क्या टेस्ट किया, इफ बूल, अगर हमारा बूल है देन व्हाट वी विल डू, सी आउट ओके ओके, तो थोड़ा इशू आ जाएगा। लेट अस डू समथिंग एल्स। अगर भूल से कर रहे हैं तो इशू रहेगा थोड़ा। लेट अस डू इट विद समथिंग एल्स। इफ आई modulo 2 is equal to Hello, I, Shajit sir. yes yes, You just use just print jmod 2. That should do. Just print jmod 2 instead of checking anything. this is how I am doing that thing only. Oh, I will yeah. print that. So if let us first check if it is which of the line is there. So instead of doing this everything again and again,
we will do if I modulo 2 is equal to 0 और if I modulo 2 is true। अगर मैं ये करता हूँ if I modulo 2, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ if I modulo 2 का मतलब क्या होगा। if I modulo 2 एक मैंने लाइन लिखी, then 1 is equal to true, else 1 is equal to false। अब इस if else का मतलब यहाँ पे क्या है, इस if else का मतलब मुझे बताओ कोई। इवन नंबर ऑफ लाइन पे ये इसको फॉल्स कर देगा 1 को, और ऑड नंबर ऑफ लाइन पे इट विल टर्न इट टू ट्रू। तो अब हमने क्या किया, इंट j इक्वल टू हमने कर दिया इनिशियलाइज 1 से। अब हम क्या कर रहे हैं, इफ 1, इसके अंदर हमने क्या किया 1 डाल दिया। अगर हमारी 1 वाली कंडीशन है तो ट्रू, तो हमने क्या किया ई आउट करवा दिया है 1 को, और 1 को आउट करवाने के बाद हमने क्या किया कि 1 को हमने कर दिया है फॉल्स। एंड एल्स कंडीशन अगर हमारी आती है तो एल्स कंडीशन में हमने क्या किया, सी आउट करवा दिया हमने 0 को, एंड 1 को कर दिया हमने ट्रू। अब इसको भी देखते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। आई थिंक सम ऑफ यू माइट हैव हैड डाउट्स इन दिस। एक बार सी आउट हैंडल कर देते हैं। ओके, द लाइन इज ऑलरेडी रिटन, लेट मी कमेंट इट आउट एंड लेट अस रिटर्न 0। चलो अब इसको हम रन करके देखते हैं कि व्हाट इज द आउटपुट। And we are giving 5 input. Okay, so it is running from 0, so let us start with 0। तो हमारा एक और एक्स्ट्रा लाइन आ जाएगी। 5 वैल्यू। ओके, तो ये मेरे को पैटर्न प्रिंट करके दे रहा है, इट इज प्रिंटिंग द पैटर्न। अब इसने पैटर्न कैसे किया, लेट अस सी कि इसने ये पैटर्न कैसे किया। तो इसके अंदर हम नेस्टेड फॉर लूप के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे थे। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल को ट्रू की तरह इनिशियलाइज कर दिया, और अगर हमारी जितनी भी इवन नंबर ऑफ रोज मतलब ओड नंबर ऑफ रोज है, ये हमारा 0 से शुरू है, तो आई थिंक जो हमारी रोज हैं हम उसके अंदर 1 को ट्रू कर देंगे। दोज हु आर पहले ही हमने रो में आते ही हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया है 2 से। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अगर वो दूसरी रो में आ रहा है या उसके बाद आ रहा है, तो हम ट्रू फॉल्स ऑल्टरनेटली उसको अप्लाई करते जा रहे हैं। तो ट्रू फॉल्स इज हैपनिंग ऑल्टरनेटली। आफ्टर द ऑल्टरनेट ट्रू फॉल्स वी आर चेकिंग इफ द वेरिएबल इज ट्रू। अगर हमारा वेरिएबल ट्रू है, वी आर प्रिंटिंग 1 एंड देन चेंजिंग द वैल्यू। और इस फॉर लूप के अंदर ही वैल्यू चेंज हुई है, तो इसके लूप के अंदर फिर दोबारा से वो आ रहा है, देन इट इज चेकिंग, नेक्स्ट टाइम द कंडीशन इज टर्निंग टू फॉल्स, so we are printing 0 and we are changing it to true. So we are playing true false here. What if we put j modulus 2? If we put j modulus 2, it will be something like which is not be accessible because j is created inside the nested loop and j is not accessible here. If we put j modulus 2 here, we can also use that. We can use j modulus 2, but why to do the processing again and again? If we do the processing, if we put j modulus 2, so every time it will perform the operation and will calculate the output. So some of the memory will be required by the CPU, and if we allocate it directly, so memory required will be less. So please paste the code in the chat section. Okay, I am pasting the code in the chat section, I think, but that will not be clearly formatted. और देखते हैं कैसा कोड आता है, let us see. I have pasted the code in the chat section, but the code is not complete and it is not even completely understandable. So what I will do, I will share the code in the okay. I will explain I modulus 2 again. Okay. So let me come to the whiteboard once again and explain it to you.
It's taking some of the time to open. So till then let's wait. तो अभी हमने क्या किया? Let us see from the beginning. सबसे पहले तो हमको 5 लाइन्स प्रिंट करनी थी. So let us see 5 लाइन्स आर देयर. 4 and 5. तो जो अब हमारी लाइन, दिस इज लाइन नंबर 0, दिस इज लाइन नंबर 1, दिस इज लाइन नंबर 2, दिस इज लाइन नंबर 3 एंड दिस इज लाइन नंबर 4. ठीक है. अब अगर मैं एक चीज को देखता हूँ, अब आप लोग आंसर देना मेरे को. 0 मॉडुलस 2, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ 0 मॉडुलस 2? 0 मॉडुलस 2 का आउटपुट क्या होगा? प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. उसके बाद 1 मॉडुलस 2 का क्या होगा? फिर उसके बाद 2 मॉडुलस 2 का क्या होगा? फिर 3 मॉडुलस 2 का क्या होगा? इसका आउटपुट एक एक करके कमेंट सेक्शन में लिखते रहो. और फिर 4 मॉडुलस 2 का आउटपुट क्या होगा? व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर दी? 0 modulus 2 will be 0, 1 modulus 2 will be 1, 2 modulus 2 will be 0, then 3 modulus 2 will be 1 and it will be 0. Yes, 0 1 0 1 0. अब हमने ये लगाई है कंडीशन. लेट मी ओपन द कोड साइड बाय साइड. तो अब हमने ये कंडीशन लगाई, इफ आई मॉडुलस 2, अगर हमारा आई मॉडुलस 2 है, मतलब इट इज इफ इट इज इक्वल टू 1. तो अगर हमारे जहाँ पे भी ये 1 है, जहाँ पे भी जिस लाइन में भी 1 है, इन दोनों लाइन में था ये 1, तो आई विल इनिशियलाइज 1 वैल्यू here. I will make it true and I will initialize 1 value, and in the other lines where there was 0, so what I will initialize? I will initialize 0 0 and 0 here. I think now this is understandable कि हमने I मॉडुलस 2 से हमने क्या किया? हमने I मॉडुलस 2 से फर्स्ट वैल्यू इनिशियलाइज हमने कर दी. तो ये हमारी जो फर्स्ट वैल्यू इनिशियलाइज हुई, they were initialized by I modulus 2. I think Sanskar Agarwal has got it. Are you all clear with this now? And if someone is facing any of the issues in the code, so please tell. अगर I modulus 2 के अंदर कोई दिक्कत है, नीचे वाला कोड we are coming to that. But first of all, let us discuss about I modulus 2. Okay, I modulus 2 तो सबको क्लियर हो गया है. तो अब I modulus 2 के बाद हम आगे वाली चीज पे आते हैं. अब नाउ लेट अस कम टू दिस थिंग. अब हमारे पास फर्स्ट वैल्यू तो सबकी इनिशियलाइज हो गई थी. अब मैंने क्या देखा, इफ दिस इज ट्रू, अगर हमारे ट्रू था तो हमने 1 प्रिंट कर दिया, एल्स आई हैव प्रिंटेड 0, तो ये वाली लाइन तो मेरी प्रिंट हो गई. अब अगर ये फॉल्स था, लाइक इफ इट वाज फॉल्स, तो हमने क्या किया, वी हैव टर्न्ड इट टू ट्रू. तो जो नेक्स्ट वैल्यू उसकी हो जाएगी दैट विल बी ट्रू. बट इसके अंदर तो हमको सिंगल ही लाइन प्रिंट करनी थी, सो दिस विल नॉट हैपन. अब इस लाइन पे आते हैं. इस लाइन के अंदर हमारा क्या हुआ, इफ 1 1 हमारा बुल ट्रू सेटिस्फाई कर गया. तो अब हमने क्या किया, वी हैव चेंज्ड इट टू फॉल्स, एंड नेक्स्ट टाइम इट विल ऑटोमेटिकली प्रिंट 0 बिकॉज द 1 वैल्यू इज फॉल्स. एंड नाउ वी आर, और 0 को हमने चेंज कर दिया 1 पे, एंड 1 को चेंज कर दिया 0 पे, एंड 0 को चेंज कर दिया 1 पे. तो जो हमारा आउटपुट होगा वो इस तरह का कुछ आ जाएगा. आई थिंक अब कोड सबको क्लियर आ गया है. Okay, I am showing the output of the code once. Mansi, I am showing the output of the code. But first of all, everyone please confirm if the code is completely understood by you, or if there is something that I need to explain to you in the code. I am running the code and I am showing the output. I think here is the output of the code. This is the output of the code, Mansi. So this is the output of the code, and if someone is facing any of the issues, so they can do that. अब अगर हम यहाँ पे J मॉडुलस 2 यूज करते हैं, above we have used I मॉडुलस 2 1, तो I मॉडुलस 2 एक ऑपरेशन है, एंड ऑपरेशन takes some of the time to perform, but allocation is direct. So allocation is direct, therefore we are using the concept of allocation rather than using the concept of performing the operation again and again. I think I am getting call, so please wait a minute. Okay, now it is fine. It should start from 1. Yes, Mansi, we can start from 1 also, or else we can do what? If I modulus 2 equal to 5. Now this will completely change the code, and now let us run the code. C plus plus 0 0 2. Now let us see what will be the difference in the output of the code.
dot slash a dot exe. And I am inputting 5 words. So it will be printing 101, 101, 0101, and 10101. So the sequence can be changed by altering the code a little bit. But the more important thing is that you should understand the concept behind it. So the concept should be understood for a better reason. Interesting. Okay, okay, okay. I think Atul is getting the idea of the patterns interesting. अब एक चीज बताओ कि rhombus का code. We have to print the code of a rhombus. Who can do the code of a rhombus? Are you clear that you can do the code of a rhombus? If you are not clear with it, we can skip it. But if you are clear, we can move to the another code. Okay, Dablina can do it. Who else can do the code? चलो मैं इसके पीछे का आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ एंड फर्दर So आप let's give this question as a homework to them, and let's take some doubts this because one we have multiple of the questions that are for the homework. Let me explain the concept for this one and we will give multiple questions as a homework. Like there are other questions as well, like fourth and fifth question. I will give them as a homework as well. Let me explain the theory for this and let us take the homework and let us practice all of these things so that you also get proficient with coding, the pattern. और पैटर्न्स एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है एंड पैटर्न्स आर इवन आस्क्ड इन योर कोडिंग इंटरव्यू. तो पैटर्न वाली चीजों को आप छोड़िए मत. पैटर्न इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड प्लीज डू इट. So I will upload the code in the GitHub. No need to worry about that. I will upload every of the code in the GitHub. But first of all, understand the concept and try it once by yourself. If I am doing it there, then you will not be benefited by it. तो सबसे पहले हमको क्या करना है. वी हैव प्रिंटेड एक हमने प्रिंट करवाया था पैटर्न स्टार 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 एंड स्टार अगेन स्टार एंड स्टार. ऐसे पैटर्न हमको प्रिंट करवाया था. नाउ अब हमको क्या करना है. अब हमको इसको इसी पैटर्न को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिंट 3 स्टार देन 2 स्टार एंड देन स्टार. हमने ये वाला पैटर्न प्रिंट करवा लिया. आई थिंक ये पैटर्न तो कोई भी प्रिंट करवा लेगा ना. इस पैटर्न को प्रिंट करवाने में किसी को इश्यू है? कोई अगर ऐसा बोले कि वो स्टार 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 का ये वाला पैटर्न भी प्रिंट नहीं करवा पाएगा तो बताओ फिर मैं इस पैटर्न को भी एक्सप्लेन करता हूँ. ये वाला पैटर्न सब लोग प्रिंट करवा लेंगे. ओके ओके सब लोग प्रिंट करवा ही लेंगे तो बहुत अच्छी बात है. सब लोगों के बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है आज. अब हमको क्या करना है. अब लेट अस print a 5 lines again. Hash. Okay, let me print something okay, different. Hash, 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 and hash. So I am printing 5 different hashes, or let it be 3 if I am using the 3 of the values. And I am printing 3 hash after every of the line. तो अब मेरा पैटर्न रोम्बस वाला जो पैटर्न है दैट इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड. अब ये पैटर्न बहुत इजी है. अब इसके अंदर हमको क्या करना है. आफ्टर प्रिंटिंग दिस पैटर्न हमको स्टार को लेके स्पेस से वो कर देना. अगर मैं स्टार की जगह स्पेस प्रिंट कर दूंगा देन दिस पैटर्न इज क्लियरली डन. तो हमको पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन हैं वी शुड नॉट गो डायरेक्टली टू द पैटर्न. हमको कैसा दिख रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक द पैटर्न इनटू सिंपल पार्ट एंड देन परफॉर्म इट. तो अगर मैं इस तरह से करूंगा तो पैटर्न का क्वेश्चन जो मेरा एक बड़ा सारा मुश्किल सा क्वेश्चन था दैट इज इजीली सॉल्व्ड. एंड yes we will print space Mansi only, but to make it visible to us that we are doing the right thing, first of all we will print star and then when we are comfortable with it then we will remove the star and print space. Okay Mansi, now let us proceed. Now let me give you another of the questions homework. Now what we will have to do, सबसे पहले तो हमको ये ट्रायंगल वाला पैटर्न जो इन्वर्टेड ट्रायंगल वाला पैटर्न था वो प्रिंट करना ही है. आफ्टर दैट आई हैव टू प्रिंट 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5. इसका मेरे पास कोड भी रिटर्न है. आई विल शेयर द कोड विद यू एंड ये कोड भी रन कर रहा है. बट इसके अंदर भी कोई मेजर कॉन्सेप्ट नहीं है. वी हैव टू इसका भी मैं थोड़ी सी एक बेसिक थ्योरी बता देता हूँ आपको. We have to initialize a variable by 1 in the starting of each row.
we will initialize the value by 1. And after printing one thing, it will be done. But when we are in this line, we will print 1 and increment it by 1 and print 1, 2. Then print 1, 2, and 3. First of all, try this pattern. After completing this pattern, move it to a shape of like this. Then print 1, 2, 3, and 4 a bit further. 4. And at last print 1, 2, 3, 4, and 5. तो इससे हमारा क्या होगा कि हमारे ये पूरा का पूरा पैटर्न प्रिंट हो जाएगा इन अनफॉर्मेटेड फॉर्म. अब इसको हमको फॉर्मेट करना है, सो वी विल पुट ए इन्वर्टेड ट्रायंगल. तो अब ये वाली चीज भी हो जाएगी हमारी पूरी. और एक क्वेश्चन और है, इसके लिए आई विल नॉट गिव हिंट टू यू, बट लेट अस थिंक कि कल ये वाला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ. टुमारो सेशन विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन ओनली, but let us see how many of you can print this question. अब इसके अंदर हमको क्या करना है, we have to print a M pattern. M pattern में क्या करना है, first we have to print a star on the third line, then we have to print a star on the second line, then we have to print a star on the first line, then we have to print a star again here, then a star again here, then a star here, then a star here, a star here, and the last star here. And this is not to be done using the printf. This is not to be done using printf. अगर ये यूजर वैल्यू डालता है, ये भी यूजर वैल्यू के बेसिस पे होगा, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. अगर user has input n as 9, then this pattern will print. If user has entered 4, so only this pattern should print. If user has input 10, so if star here should also print. तो हम पैटर्न को उसी तरह से इंक्रीज करते रहेंगे यूजिंग फोर लूप. और ये भी लूप के कॉन्सेप्ट से हो जाएगा. दिस इज ऑल्सो ए वेरी इजी क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू डेवलप अ लॉजिक बिहाइंड इट कि इस पैटर्न के पीछे लॉजिक क्या होगा. Directly you should never proceed to pattern. First of all, understand the logic behind the pattern, and if you have understood the logic, then patterns are very easy to deal with. I think that marks the end of the session. And if any of you has any of the queries in the questions or in anything, you can ask your questions now. Divyasom and me are both with you through the session, and we will guide you further about the. So Divyasom, you are live, and please, you're on the screen. And if Yeah, someone is, I muted myself. भैया आप रहने दो. आज का भैया आज छोड़ ही दिया है. अब तो आज का कोटा ज्यादा नहीं हो गया. ये थोड़ा important We question are था. taking the extra time so that within 15 days we can complete the entire course. Oops, सब कुछ. So that सब कुछ इसके कंप्लीट बाद होगा. आप सीधा मतलब PhD में जा टेंशन लेने सकते हो. वाली Anything you want to बात ही proceed. नहीं है. C++ इसके बाद बचेगी ही नहीं. इतनी चीज की गारंटी हम दे रहे हैं. बट थोड़ा टाइम तो हमारे साथ भी डेडिकेट करो. काम तो थोड़ा बहुत तो हमारे साथ भी करो. बाकी अगर किसी को डाउट हो तो मतलब पूछो. अटेंडेंस आज का अटेंडेंस के लिए जो मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन दिए हैं, आई विल सेंड ए गूगल फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन हेयर. तो वो डिस्क्रिप्शन में जैसे ही वो गूगल फॉर्म अपलोड हो जाएगा, इट विल बी अपलोडेड इन नेक्स्ट हाफ एन आवर. तो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा दैट द गूगल फॉर्म इज अपलोडेड. So do the questions and upload them in the section here. So can you please explain the 0001 code? Which one? Thakur Avneet Singh, can you please ask the question again? अब क्वेश्चन ट्राई करूंगा, उम्मीद है हो जाए. किशोर, do not try to do the complete question. First of all, try to do the question in a simpler way. First of all, try to break the question and then try to do it. Then it will be an easy question for you. Please also mention the question in the e-form. Yes, the question will be mentioned. You have to upload your file only. All of you three are UPS. वैसे मैं भी वहीं से हूँ. हाँ अबिद, we all three are from UPS, and let us meet in UPS when the COVID opens. We are currently working from our home.
कब तक फॉर्म भरना है, थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए अटेंडेंस फॉर्म भरने का, बिकॉज क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन बनाने में टाइम लगेगा Zina, I understand, that's why I have not uploaded the question form now. I will upload it till 8 and you will be given time till tomorrow session. तो आपके पास टाइम होगा till tomorrow session, क्योंकि उसके बाद तो हम ही आंसर करवा देंगे, तो कल तक आप ट्राई करो सेशन से पहले। मजा आ गया आज तो कुलदीप को, मतलब कि कुलदीप को मजा आ गया, मजा हमें भी आ गया कुलदीप, आप जैसी ऑडियंस को तो मजा हमें भी आ जाता है। Anything else you guys want to ask any of the questions regarding today's session and any of the questions regarding the previous session? When is the next quiz night? There will be a quiz night on the YouTube channel every Saturday. So हर Saturday quiz night होगी. Let's stay tuned for the Saturday to come. Yes, guys, and after quiz night, जब session finally finish होगा, we are also going to have a codathon among all of you. Codathon will be there till after the completing of the session. Hello everyone. Hello. How to declare an empty array not initialized with 0 whose size is unknown beforehand. We can use the concept of a pointer and we can initialize the array in the heap memory. तो heap memory के अंदर हमारे पास size वाली problem ही नहीं आएगी. And guys, very soon towards the advanced section of C++, last की तरह when we will discuss STL, तब हम vectors use करेंगे and आपको size का जरूरत ही नहीं है, आप size कभी भी increase कर सकते हो, decrease कर सकते हो. In STL you can use dynamic arrays and dynamic collections, so you can add anything at a time and you can remove it as well. So no need to worry about the size if we are working with STL. Hello everyone. Am I audible, Kshitij? Sarthak is here. Yes, Sarthak, you are audible. तो great guys, I have a great announcement for you guys. हर बार आता हूँ तो कुछ मजेदार से announcement लेकर आता हूँ. This time also I am having something for you guys. ठीक है, अभी सीरीज प्लान हो गई है, ठीक है, एंड मतलब एक रफ लॉन्च कर देते हैं आज, आप दिखा देते हैं कि व्हाट वी हैव प्लान फॉर यू गाइस. नेक्स्ट क्या है, ठीक है, let me share my screen. Part of dynamic memory allocation. Yes, to use the part of dynamic memory allocation और pointer का concept ही use होता है in the dynamic memory allocation. तो आज हमने एक basic concept dynamic memory allocation का भी cover कर लिया है कुलदीप. ये टॉपिक वैसे हमने बताया नहीं. Dynamic memory. Yeah. So if you are moving to dynamic memory allocation, तो C++ पहले दो methods देता था, malloc and calloc. Google about it, and अब उसको उसने replace करके एक simple method दिया new, which directly allows us for dynamic memory allocation. Guys, this is an update for you guys. Getting started with AWS, where we are going to cover almost 25 services of AWS, in which the services will be cover AI services as well. ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला है इस चीज में भी. We are going to open the registrations, very soon. You can register for this, amazing session as well. ठीक है, अभी सीरीज प्लान हो गई है. The content is in the building phase and the content is very super for you guys. तो I hope कि how much excited you are. तो एक बार यार comment section में बताओ. तेरे बोलने से पहले ही आ गया .@dot excited. Good vibes. Elbow का. नहीं मतलब good vibes भी नहीं आ रही है ना, मतलब कि क्या ही तुम देख लो, तुम ही देख लो कमेंट. नहीं. Guys, दे रखा है मैंने. When will it start? It start for 26 अप्रैल है ना. Almost 7 to 10 days की सीरीज होगी. Every day at 6 PM जो टाइम है वही टाइम रहेगा, ठीक है. बट इन दिस पर्टिकुलर सीरीज हैंड्स ऑन जो होगा ना वो नेक्स्ट लेवल होगा. AWS is something जो बहुत लोग इंडस्ट्री में पढ़ा रहे हैं, बट जो चार्ज करके पढ़ा रहे हैं ना, जो एक पर्टिकुलर पैसे लेके पढ़ा रहे हैं, उससे कहीं गुना ज्यादा अच्छा होने वाला है. मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि पैसे से बहुत ज्यादा जो कोर्स है दैट इज शेड्यूल्ड अराउंड May end, तो May end में आ रहा है डाटा स्ट्रक्चर कोर्स. टिल देन वेट फॉर इट. उससे पहले ना यार आपकी ना जितनी बेसिक्स है वो सब क्लियर करा देंगे अभी अगले हफ्ते. ऑलमोस्ट अगले हफ्ते या अगले से अगले हफ्ते वी आर गोइंग टू प्लान फॉर गेट एंड गेट अप. देन
माइक्रोसॉफ्ट एजोर, जेनकिंस, CI/CD पाइपलाइन में भी थोड़ा बहुत वर्क करेंगे, अच्छा अच्छा मस्त मस्त से प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। तो और लेट्स डीएसए ट्राई का कोर्स भी कि निकालेंगे। हाँ डीएसए का तो कोर्स मई एंड में या मई जून स्टार्टिंग में, तो मई एंड टू जून स्टार्टिंग डीएसए कोर्स विल बी लॉन्च। 15 से बीच, हाँ 15 से 26 के बीच यार। देखो यार, हमें ना थोड़ा रेस्ट चाहिए, क्योंकि 15 से 26, 15 को तो हम और कोडाथॉन करेंगे, है ना। एक्चुअली और ये भी हो इसके सकता बीच है में कि हमारा C++ का कोड भी 1 to 2 days एक्सटेंड हो जाए, 15 के बाद 17 या 18 तक भी जा सकता है। अगर टॉपिक्स बच गए तो वी हैव टू एक्सटेंड इट, so be हाँ ready with that also because the topics are very lengthy. So we are planning from 25th the एंड AWS series. okay, and I hope no, AWS के registration we will open very soon guys, very soon we are opening this registrations। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बता के ये कि we are going to do this series। बहुत दिनों से प्लान सीरीज है, कोई ऐसा नहीं है एक दिन पहले की सीरीज है। ठीक है, इसमें अभी तक जो भी सर्विसेज है, जैसे चाहे EC2 हो, EBS हो, क्लाउड फ्रंट हो, ठीक है, जो कि मेजर सर्विसेज होती है ना, जो सारी सर्विस क्लाउड, यू नो, व्हेन यू आर, जब आप एग्जाम में बैठते हो, AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर हो गया, चाहे वो बेसिक एग्जाम हो गया या एसोसिएट लेवल का एग्जाम हो गया, वहाँ पे जो यूजफुल जो सर्विसेज होती है, जो पार्ट होता है, वो हम सिखाने वाले हैं सीरीज में। तो वेयर टू गेट रजिस्टर्ड यार बताया मैंने, रजिस्ट्रेशन विल बी ओपन सून। आपके पास लिंक आ जाएगा ग्रुप्स में। अटेंडेंस का क्षितिज आपने क्या दिया है अटेंडेंस के लिए? Attendance today there are some of the questions and I will share the Google form very soon in the video description only, and after the form is available in the description we will update in your respective WhatsApp group. ओके, तो गाइस प्लीज लाइक दिस स्ट्रीम। अभी स्ट्रीम चल रही है, तो प्लीज लाइक दिस स्ट्रीम, एटलीस्ट 100 बार तो कर ही दो, है ना। लाइक दिस स्ट्रीम इफ यू लाइक, रियली इफ यू रियली लाइक द कंटेंट, अगर लगा हो कि वी आर डूइंग समथिंग गुड, ठीक है, तो Arshit, करते हैं। actually, you are asking to suggest some of the good courses for DSA till the time we start. We are, we can suggest some of the resources, but till then, you are required to practice the basics, because even if you start DSA and you don't know the basics, then it will be a little more confusing for you all. So, first of all, you should practice the basics and practice with the basic concepts which we are telling you. And then you should also know some of the services time by time and side by side. So we are creating the courses in a manner that they will benefit you the most. So you get to work with the specialization and the generalization side by side. I think you must have heard about the specialization and generalization concept. So we are working on both of the concepts, like the specialization and generalization. हाँ, वी विल हैव ग्रेट गाइस, बहुत सारे प्रोजेक्ट होने वाले हैं। वी विल डू सम AI वर्क विद AWS, तो AI का इंटीग्रेशन करेंगे AWS के साथ। एक प्रोजेक्ट उसका होगा। वी विल लॉन्च अ फुल वेबसाइट, एक वेबसाइट बनाएंगे छोटी सी, और वहीं पे लॉन्च करेंगे अपने AWS पे। वी विल यूज S3 EBS और हमारा EC2, ये तीनों का चीज का कंबाइन करके एक मस्त एक सर्विस क्रिएट करेंगे, एक मस्त प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। अरे गाइस, बहुत सही 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 यार, सही। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Overpowered. आई थिंक सो वी कैन एंड द स्ट्रीम नाउ गाइस। अगर आपके पास कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क, एंड वी आर प्लानिंग गूगल मीट विद यू गाइस। बहुत अच्छी गूगल, मतलब एक एक इंटरेक्टिव सेशन आते हैं, फॉर दैट वी आर प्लानिंग दिस। तो देखते हैं कब हम कर सकते हैं ये, ठीक है। एक आप आबिद का हुआ है तो क्वेश्चन। मुझे एक आबिद, चीज यू आर इन विच ईयर करंटली? अगर आप बता दे तो हम उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा बताएंगे। दैट यू आर इन, भैया थर्ड ईयर में प्रोजेक्ट कैसे करें, प्लीज इस पे बता दो कोई रिसर्च। जो हमारे कोर्सेज आ रहे हैं, अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, देन यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम एंड द रिसोर्सेज विच वी आर गिविंग। Practice with that and you will get to do some of the great projects till the third year. सर प्लीज स्लो पढ़ाओ यार, बहुत ज़्यादा स्लो ही पढ़ा रहे हैं। एंड इफ़ यू आर स्टिल फेसिंग सम ऑफ द इश्यूज इन द कोर्स, तो यार प्लीज़ एक बार दोबारा से वीडियो देख लो। इसीलिए ये सारी की सारी वीडियोस फॉर रेफरेंस अवेलेबल हैं लाइफ टाइम के लिए, तो एक बार इसको देखो। नुकसान हांडा इज आस्किंग डाटा साइंस पे भी कुछ। हाँ, डाटा साइंस पे भी चीज़ें आ रही हैं। डाटा साइंस का भी वेबिनार, मशीन लर्निंग डाटा साइंस से रिलेटेड भी आ रहा है, तो डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। और Yes. दिव्य सोम भी जो यहाँ पे बैठा हुआ है, ही इज ऑल्सो एन AI एक्सपर्ट एंड डाटा साइंस एक्सपर्ट।
So Yeah, we are bringing up something for my data field of science. interest and expertise is artificial intelligence and machine learning. And guys, someone is asking कि मुझे अभी basics नहीं आते, then मैं AWS में क्या करूँगा? Guys, don't worry about it because very soon you are going to be working on real world projects. And अगर आपको AWS की knowledge पहले से होगी, then you will know कि आपका project जो भी आपके PC पे चल रहा है, आप उसको AWS में deploy करके you can showcase it to the entire world. You can share a link एंड हर कोई आपकी पूरी कोड को यूटिलाइज करके लाइव अपने पीसी पे फोन पे कहीं भी टेस्ट कर सकते हैं. सो एंड AWS किसी को will be बेसिक्स एग्जैक्टली एंड दिव्यसम किसी को बेसिक्स आती हो गाइस या नहीं आती हो, मतलब अगर किसी को ये भी नहीं पता कि व्हाट इज क्लाउड एंड व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर कि क्लाउड होता कैसे है, क्लाउड कंप्यूटिंग आई क्यू है, व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन, व्हाट इज क्लाउड, क्लाउड और वर्चुअलाइजेशन में डिफरेंस क्या है, देन वी स्टार्ट. यार अटेंडेंस अटेंडेंस फॉर्म मैं कहाँ दे से रहा हूँ, अभी मैं ग्रुप दे पे रहा हूँ ग्रुप क्या अटेंडेंस है? फॉर्म आज का. guys, रौनक गुस्सा हो गया है, खत्म करो. खत्म अरे रौनक खत्म गलत कर बात, रौनक गलत बात. मतलब ऐसे हम गुस्सा नहीं होते, खत्म तो हम कर ही रहे हैं सेशन भी. ठीक है गाइस, आई थिंक अब सब गुस्सा वुस्सा ना हो जाए, तो इसलिए चलते हैं, एंड करते हैं स्ट्रीम को. इफ एनीवन हैव एनी डाउट तो डू पिंग अस ऑन टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम When चैनल the पे पिंग session for AWS is starting from 26. 26 से स्टार्ट हो रहा है यार, देखते हैं हम उससे पहले स्टार्ट कर पाए तो ठीक है, बट 26 से हो रहा है आई थिंक. थैंक तो इस नोट के साथ थैंक यू वेरी मच एवरीवन, एंड मुझे अच्छा सा लग रहा है यार, अच्छा सा लग रहा है Guys, मतलब. full stack is also coming after AWS. We have a lot of courses planned, back end, front end, containers, सब कुछ आ रहा है. So और all एक the उमंग ने बोला है, on सर कैन वी Telegram. सेव योर नंबर्स फॉर फ्यूचर रेफरेंस. तो हम तीनों के नंबर, सार्थक, माइन एंड दिव्यसम नंबर्स आर प्रेजेंट इन अ व्हाट्सएप ग्रुप. You can save them for the future references and stay in गाइस the group itself even ओके after the completion of the C++ हाँ series, so you will get to know updated about the further trainings and further resources. All the resources will be shared in your WhatsApp group एग्जैक्टली. as well. एंड गाइस हमारे नंबर सेव करने की भी नीड नहीं है, देयर आर आर लिंक्डइन चैनल्स, हमारे लिंक्डइन है आपके डिस्क्रिप्शन में, हम अपने लिंक्डइन पे सब डालते हैं. लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, अपनी सारी मतलब डॉट कुसुमा की पूरी आपके पास देख लेना, कनेक्शंस देख लेना किस किस पे डॉट कुसुमा के एग्जिस्ट करता है, तो देख लो. हाँ, तो टाटा, डॉट खत्म. कुसुमा के और Be हम active on तीनों our लोगों के भी, Telegram group. All the recent हम तीनों के future भी updates. सब मेंटर कुछ वहाँ पे प्रोफाइल दे रहा हूँ. डिस्क्रिप्शन में ही है. चलो तो ठीक है यार, मैं एंड कर रहा हूँ इस स्ट्रीम को. Okay guys, bye bye. आप Take कोर्सेज care. लाते रहो, हम ऐसे ही रिस्पॉन्ड करते रहेंगे, यही चाहिए पर हम बस, आप ऐसे ही रिस्पॉन्ड करते रहो, हम तो कोर्सेज बहुत लाते Thank you, रहेंगे. Param. Thank you. ठीक है गाइस, तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत. आई आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स गाइस. तो चलो ठीक है, जो जो अभी काम दिया है क्षितिज ने, मेंटर्स ने दिया है, तो करो यार, मस्ती करते हैं, एंड बाबा सी या टिल द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू. Okay, so everyone,